सम ऑफ ए पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन, जिसे हम सिग्मा फंक्शन भी बोलते हैं, हमने ऑलरेडी टाउ फंक्शन यानी कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर का फंक्शन कर लिया है. सो नाउ व्हाट इज सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन? द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन sigma natural number to natural number, domain and codomain both are natural numbers, defined by sigma of 1 equals to 1 and sigma n equals to the sum of positive divisors of n for n greater than 1, यानी कि जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स n को डिवाइड करते हैं उनका एडिशन, दैट इज सिग्मा n. एग्जाम्पल, सिग्मा 1 इक्वल्स टू 1 बिकॉज 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है. सिग्मा 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 4 बिकॉज 4 को 1, 2 और 4 ये 3 डिवाइड करते हैं. और सिग्मा 4 इक्वल्स टू तीनों का एडिशन, दैट इज इक्वल्स टू 7. सिग्मा 5 इक्वल्स टू 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6, क्योंकि 5 को 1 और 5 ये दोनों ही डिवाइड करते हैं. सिग्मा 6 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, दैट इज इक्वल्स टू 12. सिग्मा ऑफ 8 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, दिस इज इक्वल्स टू 15. अभी सिग्मा 100 क्या होगा? सिग्मा 100 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 25 भी डिवाइड करता है, प्लस 50 प्लस 100, दैट इज इक्वल्स टू 217. अभी अगर जो गिवन नंबर हो वो कोई लार्ज नंबर है तो उसके लिए हम क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे? लेट n ग्रेटर देन 1 एंड जो n है दैट इज इक्वल्स टू p टू द पावर अल्फा 1 इंटू p टू द पावर अल्फा 2 डॉट डॉट p k टू द पावर अल्फा k प्राइम डिकम्पोजिशन करने के बाद where p1 p2 डॉट डॉट p k all are distinct primes and alpha I always greater than equals to 1 for I equals to 1 to dot 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 k. Then sigma of n equals to, फॉर्मूला क्या है? p1 to the power alpha 1 plus 1 minus 1, p1 to the power alpha 1 plus 1 minus 1 divided by p1 minus 1 into p2 to the power alpha 2 plus 1 minus 1 divided by p2 minus 1 into dot 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 pk to the power alpha k plus 1 minus 1 divided by pk minus 1. Now examples. Solution. First find sigma of 100. अभी 100 को प्राइम डिकम्पोजिशन करें तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, देयरफॉर सिग्मा 100 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इंटू 5 क्यू, दैट इज 5 टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 31. This is equals to 217. Now for the second one, 360 equals to 2q, 3 square 5 to the power 1. Therefore sigma 360 equals to 2 to the power 4 because 3 plus 1 minus 1 divided by 2 minus 1 into 3q, 2 plus 1 3q minus 1 divided by 3 minus 1 into 5 to the power 1, so 5 square minus 1
divided by 5 minus 1, that is equals to 16 minus 1 divided by 1 into 27 minus 1 divided by 2 into 25 minus 1 divided by 4, that is equals to 15 into 13 into 6 equals to 1170. Now the third one is 1 lakh, that is equals to 2 to the power 5 into 5 to the power 5. Okay, therefore sigma of 1 lakh is equals to 2 to the power 6 minus 1, because we have 2 to the power 5, so 5 plus 1, 6 minus 1 divided by 2 minus 1 into 5 to the power 6 minus 1 divided by 5 minus 1, that is equals to 64 minus 1 divided by 1 into 15625 minus 1 divided by 4, that is equals to 63 into 3906.